With us on Times Now, a thinker, scholar, economist and a gentleman politician. Former Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh is no more. He took his last breath at the age of 92 at All India Institute of Medical Sciences in Delhi, where he was admitted yesterday. Top leaders, including the President, the Vice President and the Prime Minister and Union Ministers, have paid their last respect to the former Prime Minister. All government programs scheduled for today have been cancelled. A national mourning of 7 days will be declared and Dr. Manmohan Singh's last rites will be conducted with full state honours. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi, in a special address, lauded Dr. Singh's contributions to the country. According to him, he will always be remembered as a reformist. Listen in. पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे।
जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। So that was the message by Prime Minister Narendra Modi, and we are now joined by Mr. Shahid Siddiqui, former Member of Parliament, Rajya Sabha and editor, Nayi Duniya. Good morning, sir. Thank you very much for speaking with us here on Times Now. It's an extremely sad day for each one of us as we all mourn the loss of former Prime Minister of this country, Dr. Manmohan Singh. What are your thoughts today? How will you like to remember Dr. Singh? You know, I knew Dr. Singh from my student days in Delhi University. But he was teaching in Delhi School of Economics, but later on I met him when he was advisor to the Ministry of Finance, and he had come to the university. And after that I worked with him in the ICC. He was the chairman of the economic cell and I was the chairman of the minority cell. Our offices were adjacent to each other. And then as a member of parliament, I knew him. I will regard him as not just a great Indian leader, but as a great global leader. I think in the 21st century, if you choose one of the greatest leaders of the 21st century, then his name will be at the top. Dr. Manmohan Singh's name will be at the top of the leaders of this century. He was a great economist, but more than that, he was a man who understood India, who understood the common man of India, the poor man of India, and he represented the moral authority of India. The world respected him because he represented not just a great economic power. Everybody knows that. He made India a great economic power. What we are today, it's because of Manmohan Singh. India was in great trouble when Narasimha Rao ji became the Prime Minister in 1992, 91, and India was on the verge of economic collapse. From there, he made India one of the great economic powers. It was his steps, his decisions, which led India to be what we are today. But more than that, he told the world that we may be economic power, we may be a superpower, we may be a nuclear power, but more than that, we are a moral power. Vishwaguru, we are because of our moral authority, because of the Buddha, because of the Rama, because of the Guru Nanak, because of the Sufi saints, because of Mahatma Gandhi, and all that was present in his personality, in his life. He knew Urdu very well, so he sometimes used to read Urdu couplets and used to invite me and recite some of his poetry and some of his read my paper and then tell me what was wrong, what was right. I think he was a thorough gentleman. I have known so many politicians in my life, but not someone as gentle as Dr. Manmohan Singh. Well, absolutely. We can all agree to that. Thank you very much, sir, for speaking with us here on Times Now and sharing with us your thoughts. We will slip into another very, very short break at this point.